Hello and welcome back to my channel of Simplified Psychopathology. This is Ritvik Sharma, your host. My last video was on restless leg syndrome. That was a sleep disorder. If you have not checked my last video, please go ahead and check. This video is all about disruptive impulse control and conduct disorder. In my this video, I will talk about disruptive impulse control and conduct disorder and what are the DSM classification, and that is oppositional defiant disorder, ODD, intermittent explosive disorder, IED, conduct disorder, and what is the clinical picture, differential diagnosis, epidemiology, etiology, prognosis, and treatment. Okay, let's talk about disruptive impulse control disorder and conduct disorder. What is that? Okay. In disruptive impulse control and conduct disorder, that is the impulse control disorder, a group of behavioral conditions that make it difficult to control your action or reaction. These are those people who are not able to control their actions or reactions. These problematic behavior often cause harms to others and yourself. They can also lead to issues with the law. भाई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे आप लड़ाई हो सकती है एक्शन और रिएक्शन से, इनका बहुत एंग्री आउटबर्स्ट रहता है. सम एग्जांपल्स ऑफ दीज बिहेवियर इंक्लूड एंग्री आउटबर्स्ट, आर्ग्यूइंग एंड फाइटिंग, किसी से भी लड़ाई लड़ लेना, मार देना, डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी, डिफायंस एंड डिसोबीडियंस, स्टीलिंग, ब्रेकिंग रूल्स और लॉज. Signs of impulse control disorder typically begin in childhood. Childhood से ही impulse control disorders चालू हो जाते हैं. ये जो वो बच्चे नहीं होते हैं कि एकदम से आपको बुली करना, ये स्टार्टिंग से ही अप्रॉक्स लाइक सेकेंड और थर्ड क्लास या फर्स्ट क्लास से, या जो पेट्स होते हैं उनको मारना, या बाहर के जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, या फिर उन लोग को पत्थर फेंक के मारना या उनको परेशान करना, दिस इज अदर लोगों को परेशान करना, दिस इज व्हाट द थिंग इज व्हिच कम्स इन impulse control disorder. They are not able to control their impulses. Okay, let's talk about how they are differentiated and types of impulse control disorder as per DSM-5. That is ODD, conduct disorder, intermittent explosive disorder, kleptomania, and pyromania. What is ODD? This conduct and this condition involves a continuation pattern of uncooperative behavior, defiant and sometimes hostile behavior toward people in authority. ये अथॉरिटिक बिहेवियर को बिल्कुल अथॉरिटी को बिल्कुल हेट करते हैं, और जो भी अथॉरिटी में होगा उनसे हॉस्टाइल बिहेवियर रहेगा और उनसे अनकोऑपरेटिव रहेंगे और डिफाइन रहेंगे. जैसे इफ योर फादर इज इन अ फैमिली इज authoritative, or there's a teacher in your class which is authoritative, they will show a hostile behavior, they will be defined, and they will be uncooperative towards them. What is conduct disorder? This condition involves an ongoing pattern of aggression towards other. किसी के भी साथ पे इनका अदर्स के साथ एक एग्रेशन होगा, ऑनगोइंग पैटर्न होगा एग्रेशन का. ये किसी के साथ भी हो सकता है, whether it would be your brother or sister or anybody which is coming at your place and coming towards you. That can be a conduct disorder. Children with this condition may also show the serious violation of rules and social norms at home, in schools, and with peers. Serious social violation वाला है, और रूल्स एंड रेगुलेशन, सोशल नॉर्म्स एट होम, किसी से भी लड़ जाते हैं, हर आदमी से एग्रेशन दिखाना है. दैट इज व्हाट व्हिच इज कमिंग इन कंडक्ट डिसऑर्डर. इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर. दिस कंडीशन वाज फ्रीक्वेंट impulsive anger outbursts or aggression that causes significant distress. एकदम से इनका impulsive एंगर आउटबर्स्ट हो सकता है. ये इट कैन कम विद बाइपोलर डिसऑर्डर एज वेल, कि आपको इनका पता नहीं होता मूड कब खराब होगा, एकदम से एंगर आउटबर्स्ट होगा, एग्रेशन होगा, और सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस हो सकता है. क्लेप्टोमेनिया. दिस इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन विच यू फील एन ओवरपावरिंग इररेसिस्टिबल अर्ज टू स्टील थिंग्स. यहाँ पे कंपल्सिव थॉट्स आ सकते हैं स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए. People have this order, known that stealing is wrong and put them into trouble, but they can't stop अपने आप को रोक नहीं पाते हैं. Pyromania. This is a mental health condition which you can resist to us to start. You know the fire के हमेशा fire start करने के बारे में, you know the fire the harmful, but you can't control the impulses to start one. ये सिंपल इनके अंदर कंपल्सिव थॉट्स होते हैं फायर स्टार्ट करने के लिए, बट इनको पता तो है फायर उड़ाना रॉन्ग है, लेकिन ये खुद करते हैं उसके बाद भी. They have the guilt, but they still do it because of the compulsive thoughts which is coming, recurring thoughts which are coming in your mind. Pyromania. Feel tension before setting fires and release after. इनको टेंशन बिफोर होती है, फिर धीरे धीरे रिलीज हो जाती है आफ्टर उसके. Disruptive impulse control and conduct disorder. How common are they? Each impulse control disorder affect different percentages of general
US population. Oppositional defiant disorder comes around 3.3% of children and adolescents. Conduct disorder, 4% of children and adolescents. Intermittent explosive disorder, 2.7%. Kleptomania, 0.6%. Pyromania is the rarest type of impulse control disorder. One study showed that only 3% of people in prison or for arson specifically met the criteria for pyromania. Because all the criteria which are coming, that should be met. Okay, ICDs tend to affect people assigned male at birth, AMAB, more often than people assigned female at birth, except for kleptomania. यहाँ पे जो ICDs हैं tend to affect more people. ICD आपका बहुत ज्यादा affect करेगा उनको जो assigned female at birth, male at birth, ना कि आपका एक side female at birth. ठीक है, let's talk about what are the symptoms comes in disruptive impulse control disorder. वही, each impulse control disorder different kind of system, but they all involves a decreased ability to control your own behavior. अपने आप की जो behavior है, actions है, reactions को ये लोग control नहीं कर पाते, which often negatively affects or other break people or breaks law. Most people with an impulse control disorder know their behavior is inappropriate. उनको guilt तो होती है, उनको पता तो होता है, people with, but उनको आपका रिकरिंग थॉट्स आते रहते हैं, कंपल्सिव थॉट्स आते रहते हैं जो ये करते हैं. पीपल विद एन आईसीडी यूजुअली फील एन इंक्रीजिंग इंटरनल टेंशन बिफोर दे एक्ट आउट. भाई मैंने आपको कहा कंपल्सिव थॉट्स आएंगे, टेंशन होती रहेगी दिमाग में जब तक वो करेंगे नहीं. आफ्टर द डिवाइन बिहेवियर दे ऑफन फील अ रिलीज और कैथारसिस. धीरे 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 वो टेंशन रिलीज हो जाती है. Another way to think of impulsive control disorders that behavior are externalizing. In other words, people with ICD express resentment and hostility to outwardly to others. This often creates conflict with other people. यहाँ पे resentment और hostility होती है outwards to other. हमेशा aggression रहता है और ये एकदम से socialize नहीं कर सकते हैं लोग दूसरे लोगों से. This often creates conflict with other people. This is different from other kinds of mental health like anxiety, disorders, and mood disorder, in which the person internalizes their distress. It is important to remember that most kids become defiant at times. These test and other people boundaries to what's appropriate and what's not. Okay, let's talk about causes of that. Researchers are still learning about the causes of impulse control disorders so far that they think a variety of factors can contribute to their development, including genetics, environment, and biology. Genetics में क्या हो सकता है? Studies show that children in ODD are more likely to have biological parents with mood disorder. वही मैंने आपको बताया, mood disorder वाला parents के साथ ये ODD हो सकता है. And children with conduct disorder more likely to have biological parents with schizophrenia, ADHD, substance use disorder, or emotional personality disorder. That suggests that there may be genetic factors at play. और ये आपका comorbidity और आप differential diagnosis में भी आ सकता है. ठीक है, तो please understand that as well. Patients के साथ environment may contribute to ICD is low socioeconomic status. आपके ट्रॉमा भरा रहेगा और उसके अंदर उसको निकाल नहीं पाओगे. That can also affect way of low social status. Violence, भाई आपका बुली हुआ है स्टार्टिंग से and you're not able to trauma that release. तो कम्युनिटी वायलेंस है, चाइल्ड नेग्लेक्ट, आपका नेग्लेक्शन हुआ है, एक्सपीरियंसिंग और विटनेसिंग अब्यूज एंड हैव डिवाइंड पीयर्स और फ्रेंड्स. ठीक है, biology is some studies have abnormal changes in brain like cortisol activity in people with ICD. Cortisol अगर ज्यादा हो रहा है that can affect in that way as well. Mental health professional diagnose impulse control disorder based on criterion DSM-5. कैसे diagnose किया जाता है? You or your child will likely to need to see a psychologist or psychiatrist. If you or they are showing signs of impulse control disorder, these experts usually is basically designed interview or यहाँ पे assessment questions दिए जाते हैं from and the patient needs to answer these questions and then we can understand if he or she is suffering from this disorder or not. Psychiatrists and psychologists often rely on reports of people close to the person and get fully understanding of their behavior. This include parents, siblings, friends, and teachers. क्योंकि आप खुद से तो बता नहीं सकते. ट्रीटमेंट में क्या यूजुअली इन्वॉल्व रहता है इन डिसऑर्डर्स में? इसमें थेरेपी इन्वॉल्व रहती है, हेल्पफुल पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज फॉर आईसीडीज बिकॉज स्टार्टिंग बचपन से ही पता चल जाता है. रिड्यूसिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर.
जो आपका अनडिजायरेबल बिहेवियर आ रहा है उसका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देना चाहिए पेरेंट्स को। ठीक है, इनकरेज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जैसे इंडिया में पीपल इनकरेज एवरी अदर थिंग व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग, सो वी हैव डोंट हैव टू इनकरेज the negative things which we are doing. Encouraging behaviors that involve feeling empathy and concerns for others, आपको empathy और concern for others को encourage करना चाहिए। Using non-violent discipline, non-violent का discipline होना चाहिए। Making inconsistent predictable parenting decisions, specific therapies that can include parent management training। ये एक parental management training therapy है। PMT involves teaching parents or caregivers techniques to help their child improve behaviors। ये पेरेंट्स के लिए थेरेपी है जो उनको टीच करते हैं कि आपके बच्चों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं बिहेवियर को, और उनके लिए न्यू स्किल कैसे वो कर सकते हैं लर्निंग के लिए। दिस थेरेपीज आर सेट टू कंसिस्टेंट डिसिप्लिन विद प्रॉपर रिवॉर्डिंग ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर। और इसके अलावा यहाँ पे आप मल्टी सिस्टमिक थेरेपी यूज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ थेरेपी यूजुअली यूजेस फैमिली स्ट्रेंथ टू इनकरेज पॉजिटिव कॉपिंग एक्टिविटीज। वो पिछले वाले थेरेपी की तरह ही है। लाइसेंस थेरेपिस्ट वर्क्स, यहाँ पे थेरेपिस्ट फैमिली के साथ काम करता है, वहां पे थेरेपिस्ट फैमिली के साथ काम नहीं करता है। और यहाँ पे पेरेंट्स और केयर गिवर्स को रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर एंड रिड्यूस नेगेटिव बिहेवियर। दे हेल्प द फैमिली टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी यूज कर सकते हैं। सीबीटी इज अ स्ट्रक्चर्ड गोल ओरिएंटेड टाइप ऑफ साइकोथेरेपी। थेरेपी इज यूज इट फॉर चाइल्ड विद एन आईसीडी along with parent management के साथ होगा। During CBT, a therapist helps your child take a close look at their thoughts and behaviors and emotions. They will come to understand how their thoughts affects their actions. Through CBT, they can unlearn negative thoughts and behavior to learn to adopt healthier and thinking patterns। यहाँ पर आपका क्या है, सीबीटी आपको हेल्प करेगी आपके जो थॉट्स आ रहे हैं उनको चेंज करने के लिए। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज करते हैं इन सीबीटी, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट देयर एक्शंस कैन आल्सो बी चेंज, एंड दैट विल हेल्प to work with impulse control disorder। Okay, so this is all about disruptive impulse control disorder. This is introduction. In my next video, I will talk about ODD, and also I will cover up the whole part of disruptive impulse control disorder. If you have any doubts, any questions about this, please comment in my comment section, or you can see my other videos as well. And if you have not seen my videos in sleep disorder, please go ahead and check and subscribe my channel of Simplified Psychopathology. Thank you.